Hello student. So today we are going to discuss about a new chapter which is about planning. So student, this is the first function of management. So first of all we should know the meaning of management. As you already know, the management means the art of getting things done by others. Okay. So we already have discussed the meaning of management. So in order to complete the management function, we have to perform the 5 basic function. Okay. So first function is planning. So today we are going to discuss in details about the planning, its feature and importance. So let's start. So first of all, you should know the meaning of planning. So what do you mean by plan? So planning, here it is given that planning is basically a decision making process. It sets out the different alternative courses of action that organization and its individual members can take up over a period of time. Okay. सो दिस मीन्स व्हाट प्लानिंग हमेशा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है. वी प्लान फॉर द फ्यूचर. Okay, so in any organization, if you want to start any function, first of all you should have to make some plans. You should have to think, you should have to make a blueprint that what you are going to do in future, means what you are going to accomplish in future. Okay, so planning is an attempt on the part of manager to anticipate the future in order to achieve a better performance. As you know, the management is working for what, so that they can achieve the organizational goals or the better performance, and in order to get the better performance they need to plan. Okay, so it is a process of determining how an organization can get into where it wants to go and what it will have to do in order to achieve those ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. बेसिकली मीन्स ये प्लानिंग क्या होता है, वो सोचते हैं कि इन फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं. ओके, और उसको इन फ्यूचर में जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा. तो ये सब क्या होता है, प्लानिंग में डिसाइड होते हैं. Okay, so this is the meaning of planning, and in your book you can get lots of definitions of planning, so you can go through the points. Okay, so I hope you have understood the meaning of planning. So actually this is what, देखो प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट. ओके, कोई भी मैनेजमेंट को अगर सक्सेस बनाना चाहते हो तो प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, वेयर इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन. मीन्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके ज़रिए मीन्स हम लोग वो काम करेंगे और कौन सी जगह पे करेंगे. मीन्स बेसिकली प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए. क्लियर. So for example, here I would like to give you an example. Like students, as now you are in class 12. So after class 10 you have decided, you have made plan कि okay we have to choose, you have decided that whether to choose go for science stream, art stream or commerce stream, and you have decided कि ओके यू शुड गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों ने सोचा कि शायद स्कोप बहुत ज़्यादा होगा. यू कैन यू इन फ्यूचर सो दैट यू कैन टेक अप CA, CS, MBA, MCOM, एनी कोर्सेज. क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये तुम लोगों ने अभी जब क्लास 10 में जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तब तुम लोगों ने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में जाके क्या करोगे. दैट मीन्स यू मीन्स तुम्हारा एम है कि CA बनना, बट CA बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक प्लान. तो प्लान के लिए तुमने क्या किया, क्लास 12 में तुमने 11-12 में तुमने कॉमर्स लिया. उसके बाद ऐसे करके प्रोसेसिंग होता जाएगा और यू विल वन डे यू विल बिकम ए CA. सो दिस इज़ व्हाट, ये प्लानिंग होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग होता है और जहाँ पे हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो point number 1 is primary or basic function. So obviously it is the first function of management. Without performing this function you cannot go for the other functions. Okay, so कोई भी मैनेजमेंट में कुछ भी काम, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन मैनेजमेंट वी हैव टू सेट ए प्लान और वी हैव टू सेट ए गोल कि ये हम लोगों को अचीव करना होगा. तो उसके लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन इज प्लानिंग. तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी और बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ अ प्राइमरी बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेस्ट. ओके, so this is about the primary function. Point number 2 is pervasive function. Now pervasive का meaning all of we know. Pervasive का meaning क्या है student? It is
which is available everywhere, which is universal. Okay, so planning is performed by top level management, middle level and lower level managers. Each and every manager has to perform it regardless of his level and area of operation. However, nature and scope of planning वेरीज एट ईच लेवल मैनेजमेंट एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन. मीन्स चाहे मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, हर जगह पे प्लानिंग होती है. प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. इवन कि हर इंडिविजुअल को प्लानिंग करना पड़ता है एज ए एम्प्लॉई. ओके, सो that's why it is one of the function that planning is a pervasive function. It is not necessary that हमेशा top level management ही plan करेंगे. हाँ, they always make plans for the whole organization, but after that the other levels like middle level and lower level, they have to make plans for their own work. Okay, so उनको भी plan बनाना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पसफुल. तो प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग का और एक फीचर्स होता है पर्पसफुल. प्लानिंग इज पर्पसफुल इन नेचर. इट ऑलवेज बिगिंस विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू फुलफिल. मीन्स प्लानिंग हम लोग ऐसे नहीं करते, किसके लिए करते हैं? कुछ अचीव करने के लिए करते हैं. दैट मीन्स इसका कुछ पर्पस रहता है. ओके, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट प्लानिंग इज अ पर्पसफुल. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी. ओके, सो मेंटल एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? आई थिंक हियर पॉइंट नंबर 8 इज इंटेलेक्चुअल process and mental activity to some extent same. Okay, so mental activity means क्या होता है? Planning involves an intellectual exercise. It requires some sort of advanced thinking and foresight. That means planning में होता है ना, like दूसरे functions में जैसे कि it are the physical exercise जहाँ पे तुम्हें manually कुछ काम करना पड़ेगा. But in case of planning you have to think. Okay, you have to foresight. You have to think for the future, that what might going to happen in future on the basis of what you are going to do at present. Okay, so that's why you can say that is a mental activity, और इसको हम लोग intellectual process भी बोल सकते हैं. Point number, next point is continuous process. Okay, planning is a continuous process. That means it's a never ending process. The process of planning goes on and on in the organization and forever during its lifetime. लाइफ तक के लिए चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सपोज क्लास 10 तक जब तुम लोगों ने पढ़ाई किया था कि अच्छा ऐसे पढ़ाई करेंगे सो डैट यू कैन स्कोर गुड इन योर HSLC. सो उसके बाद प्लानिंग क्या छोड़ दिया? अब तुम लोगों ने यू पीपल आर प्लानिंग फॉर क्लास 12. आफ्टर दैट अगेन यू पीपल आर going to plan for your higher studies. So planning, it is a continuous process. It will never stop. So in the same way in case of management or organization, whenever any goal or target achieved, so do you think they will stop? No, they will again further plans for the future. Okay, next point is dynamic process. Now dynamic process का meaning क्या होता है? See, planning is a dynamic process. The plan should be flexible so that they can be carried through even when the situation undergoes a change within the organization. See, the environment, the business environment, in our earlier chapter we have understood that it is not static, it is changing. तो ऐसे केसेस में your plan should be flexible one. ऐसा नहीं है कि तुमने एक प्लान बनाया and according to this plan you have to follow always. No, if the environment required, if the business required, then that time you have to change the process. Okay, that's why you can say that it is a dynamic process. Next, it is future oriented. Planning is always future oriented. That means it is always done for the future. Every plan is prepared to meet the challenges and threats that are likely to come up in the future. ठीक है, so future में क्या होने वाला है उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं. हमेशा याद रखना, प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है. So this is all about the features of planning. Okay, next point is importance of planning. So why it is that important in the organization? Why? Okay, we have understood that planning, the features of what are the features or natures of planning, but what is the requirement of planning? What is necessary? So point number 1 is, it is here given that it sets the objectives, targets and goals. So planning helps to set up the objectives, targets and goals of the organization as clearly as possible. Thus everyone in the organization becomes aware of the organizational objectives and what an individual is supposed to do in order to fulfill the objectives of the organization successfully. This means what? Generally planning क्या करते हैं, एक organizations का plan फ्यूचर में क्या गोल अचीव करने वाले हैं वो उसको सेट करते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है, द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग, द मैनेजर्स हु आर वर्किंग, दे आर मस्ट वेल अवेयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन वर्क बेटर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स. Point number 2 is planning minimizes the uncertainty. See student, future is uncertain. You cannot predict the future. That no matter how much plan you have made, you cannot predict that there may be some external or internal changes. So
you may think that your plan at present today, suppose you are making plan for the future, you should not take it for granted that your plan will work always. There may be some situations, there may be some times where you have to change your plan. So future is uncertain, but if you properly plan for your future, so at least you can minimize the uncertainty. It doesn't mean that you can reduce the uncertainty. Uncertainty reduce तो नहीं कर सकते क्योंकि future is uncertain, but तुम as अगर plan के मुताबिक चलो तो कुछ ना कुछ तुम reduce कर सकते हो, means uncertainty reduce कर सकते हो. Planning provides an opportunity to the managers to look ahead or foresee the uncertainties surrounding the organization, which may occur due to change in technology, taste, habit, fashion of the consumers. So planning is essentially an assessment about the future and making provisions for the same accordingly. So planning helps to minimize all these uncertainties. Okay, next point is it facilitates effective control. Now student, you should know that whether your plan is working good or not, whether your planning is whether your people or your the performance which your managers or employees are working, they are at par the planning or not. For this purpose we need effective controlling. तो controlling करने के लिए भी planning ही help करते हैं. क्यों? Planning helps the manager to perform their control functions in a better and effective manner. Planning provides a good basis for control by management. It should be noted that unplanned activities are beyond the purview of control and only the planned activities are capable of being controlled effectively. Controlling का meaning क्या होता है? We have to measure. Controlling plus function होता है management का, where we have to measure that if the employees are working as per the plan or not. So एक organization में अगर planned work होते हैं और unplanned work होते हैं, अगर planned work हो रहे हैं तो उसमें controlling करना बहुत easy हो जाता है क्योंकि you can easily check that whether the work which are being done by the employees are as per the planning or not. तो उसमें हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं. अगर इफ इट इज़ नॉट एज पर द प्लानिंग, दैट मीन्स सम डेविएशंस या फिर फॉल्स इज देयर, देन करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. और अगर इट इज़ वर्क एज पर द प्लानिंग, तो ऑब्वियसली वी कैन सपोर्ट द प्लान, वी कैन सपोर्ट द एक्टिविटीज़. ओके, सो कंट्रोलिंग फंक्शन को इफेक्टिवली फैसिलिटेट कौन करते हैं? प्लानिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज optimum utilization of resources. As you know, organizational resources are scarce. तो ऐसे केसेस में रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसको अगर प्रॉपरली एज पर द प्लान अगर यूज़ किया जाता है तो वेस्टेज भी बहुत रिड्यूस होते हैं. सो प्लानिंग एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फर्म और द ऑर्गेनाइजेशन. साउंड प्लानिंग मीन्स साउंड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स एज वेल एज judicious allocation of scarce resources to ensure optimum utilization. Next point is it serve as a guide for the future course of action. तो future में actually हम लोग क्या देखो, as we already have studied in our अर्लियर स्लाइड्स जहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे कि फ्यूचरिस्टिक होते हैं प्लानिंग. तो सिंस ए प्लान इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, सो नेचुरली इट सर्व एज ए गुड गाइड फॉर द फ्यूचर. सो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं. ठीक है, फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे अगर प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. देन it helps in motivating the employees. Okay, so effective planning also helps in motivating the employees. Now how? See student, if there is a proper plan ki what to do in future, what to do so that you can achieve the goals in future, that means what, तो हर एक एम्प्लॉयज़ को अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हो जाता है, तो उससे वो लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं कि ओके दे हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क सो दैट दे विल बी एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़. तो ऐसे होते हैं कि प्लानिंग का इम्पॉर्टेंस एंड विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इट्स फीचर एंड इम्पॉर्टेंस. ओके, so if you have any doubt you can write down in the comment section. So that is for today. Thank you students.